हेलो। चलिए आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। एंड इससे पहले हमने दो लेक्चर्स कर रखे हैं, उसमें हमने बात करी है कि फर्स्ट लेक्चर वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस, सेकंड लेक्चर वी कंप्लीटली इन डिटेल टॉक अबाउट द कंप्लीट 50 मिनट का वीडियो है, एवरीथिंग वी टॉक। एंड इन दैट वन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सारी चीजें बातें करी ना। आज का लेक्चर उतना लंबा नहीं होगा, डोंट वरी। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स, उसके सिंबल्स क्या होते हैं, क्लोज्ड ओपन सर्किट क्या होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट में हम करने वाले हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके। नाउ इससे पहले आई गेस लास्ट लेक्चर में मैंने एक नो होमवर्क दिया था। शैल वी डू दैट? ओके, लेट्स टेक दिस वन। Let's take the whole question. Okay, now let's complete the homework problem first, then we'll move. Okay, now see, in this question, what all data is given? Okay, what all things are given? Let me check the camera alignment and all those things. I'm just slowly working upon all those things. I need lighting, webcam, and all those things. We'll see. We'll see all those things. Okay, now what all things are given? The first one, it is given that how much time is required for number of electrons is given as 10 to the power 20 to circuit if the circuit is maintained at I is given as 0.8 ampere. Now from here, number is given, so from there I can find Q, I guess. We know that Q equals to NE. Okay, so Q equals to N is given as 10 to the power 20 into E is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. 10 to the power 20, 10 to the power minus 19. So it will be 1.6 into 10. So 16 coulomb of charge is there. Now I got the Q, so I can apply this in the formula is equals to I is equals to Q by T. Remember, electric current is equals to total charge per unit, per unit time. Okay, total current, total charge is 16 coulomb, and time is it given? No, time is not given. Current is given. Okay, so time is not given. So 0.8 ampere current is given is equals to 16 coulomb of charge divided by time. From here, if we try to find the time, I can get 16. Okay, since everything is in SI unit, so I need not bother about the unit now. 16 divided by this one will come here 0.8. 8 to the here I can cancel out. It will be 16 into 10 divided by 8. 8 to the 16. Okay, so 20 seconds time. This is the answer. How many of you got? 20 second आंसर आएगा। ठीक है, नहीं समझ आया, you can again rewind it, go back to the video and you can check it out again. क्लियर है? ये क्लियर है? नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि जब इलेक्ट्रिक करंट होता है थ्रू अ कंडक्टर इट पासेस। ठीक है, सारा मामला सेट है, अभी एवरीथिंग इज क्लियर। इलेक्ट्रिक करंट है, सर्किट है, एवरीथिंग इज देयर। अभी इज इट पॉसिबल कि मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, एक मैंने कंडक्टर प्रोवाइड कर दिया और उससे क्या लाइक करंट पास कर जाएगा ना? एक क्वेश्चन, इफ यू रिमेम्बर लास्ट क्लास आई वाज आस्किंग वन क्वेश्चन कि इफ यू स्विच ऑन अ बल्ब will it glow? Okay, so last class our answer was yes, it will glow, and based on that we tried understanding the electric current. Now again I am asking that what happens when we switch on a bulb? Okay, will it glow? Will it glow? Are you sure? Are you sure about will it light up? There are different situations, different scenarios whether it may not work. Okay, for it to light up, the bulb to light up, the circuit, proper circuit should be there, and that circuit, that also should be the closed. Okay, क्या बात कर रहे हैं, क्या सर्किट होता है, क्या क्लोज्ड ओपन, एवरीथिंग we will see one by one, no problem. Now for first of all, let's talk about the definition. Let's talk about the definition. What is the definition of electric circuit? So electric circuit is defined as the closed conducting part, a closed conducting path.
closed conducting path through which electric current flow. Through which electric current flow. Okay, ये हो गया. दिस इज अबाउट द डेफिनेशन. इसमें जो सर्किट होता है दो टाइप के हो सकते हैं. वन इट कैन बी ओपन सर्किट एंड अनदर वन इट कैन बी अ क्लोज्ड सर्किट. ठीक है, दोनों की बात करेंगे जब हम. फर्स्ट लेट्स कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स, देन आई विल ड्रॉ सम सर्किट डायग्राम्स यूजिंग द फेट simulations. There I will tell you when I can say a circuit is closed and a circuit is open. Okay, now I'll give you a quick table for reference if you want, or else if you want me to write down, I can write down also, no problem. But I guess this table will help you. Okay, a quick reference. See, okay, this one. Better I take it here. Okay, now see, it starts with the electric cell. इससे भी पहले एक wire का वो आता है. When we have to show wire, so we just denote with a single line. Electric cell is denoted by this. Battery. Okay, so battery will be denoted like, see, this is plus and here it is minus. Combination of cells. अच्छा, बैटरी किसको बोलते हैं? बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. प्लग की अगर ओपन है, मतलब इसमें से करंट पास नहीं कर रहा है, देन इट विल बी लाइक दिस वन. व्हेन इट इज क्लोज, देन इट विल बी लाइक दिस वन. A wire which is joined is like this one. A wire crossing without joining is like this one. Electrical bulb, okay, shown like this one. अच्छा, when the bulb glows, ठीक है, ऐसे नहीं. Okay, so we do like this one, so to show that the bulb is glowing. Resistor क्या होता है आगे चैप्टर में बात करेंगे. रियोस्टेट ये होता है, ये मीटर होता है, ये वोल्ट मीटर होता है. ठीक है. स्विच जो है कभी कभी हम ऐसे भी यूज करते हैं. ठीक है, switch is used like this one also, it is open and this one is closed. Okay, so switch is used in that way also. So these are the components and their symbols. Acha, remembering and knowing about these symbols is very important because every time I will not be writing the whole word for, like ऐसा नहीं कि bulb and then battery. I will be using the symbols for that. Using these symbols when I make the circuit diagram, that when I make a circuit, that is called as the electric circuit diagram. जैसे कि one simpler one I will take, जैसे कि let's say there is a एक बैटरी मैंने लिया. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. ठीक है, यहाँ से मैंने लगा दिया इसमें स्विच. ये हो गया स्विच. एंड लेट्स कनेक्ट अ बल्ब हियर. ठीक है, और आई कनेक्ट इट. सो दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी सिंपलेस्ट सर्किट डायग्राम. ठीक है, इट इज द वेरी सिंपलेस्ट वन द सर्किट डायग्राम. इसी तरह और भी बहुत सारे सर्किट डायग्राम होते हैं. अच्छा, दिस वन इज ओपन नाउ, the current is not flowing. When I connect this one, then it become closed. It is a closed circuit diagram. ठीक है, when it closes, so bulb will start glowing. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एकदम से इसको समझना शायद problematic हो. Better I show you using the simulation. Let me change the screen. Let me change the screen. One page. Wait. Let me check. Oops. Let me connect to the network. I need to show you some simulation. I guess in the last class I was showing a simulation, na FET simulations. So same thing I'm gonna show you to make you understand better about the electric circuits. Wow, everything is happening now only. Battery gone. Let me connect to charger. Okay. Okay, maybe I can show you now. One, yeah, got it. So I hope it is visible. Let me webcam. Okay, everything is fine.
Okay, everything clear? Now see, I'm gonna draw a simplest circuit diagram. एक वायर लिया, जो भी लगाना है, as your wish, I'll put that for you. ठीक है, एक बैटरी लिया, बैटरी कनेक्ट करा, then I put a wire again, एक स्विच डाल देते हैं, और कुछ डालना, कैपेसिटर वगैरह हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो we are not gonna go in much detail of it. Okay, or fuse and all everything when I will read, I will tell you what all things are there. Now I connect it here. Okay, I'm gonna connect it here. Just extend it a little bit, and again put the wire, and let's take a bulb. Okay, now I'm gonna connect it. Okay, now this circuit, you can see the bulb is not glowing now because the circuit is open, the switch is not closed. Okay, switch is not closed. If I close the switch, see, the current starts flowing. Okay, and the bulb starts glowing. Okay, so this is called a circuit diagram, and this is a complete circuit. This circuit is called as a closed circuit. When I open it, it is called as a open circuit. ठीक है? Clear? Clear? I hope it's clear. Now let's get back to our discussion of one note. Okay, so I hope the electric circuit and the circuit diagram and the electrical components and its symbols, it is clear now. Okay, it is clear now. Now we are heading back to the last discussion of this session, that is the direction of electric current. Very important, very important. Direction of electric current. Acha. In the last one, when I showed you, this is the positive and this is negative, and the charge goes from positive to negative direction. Okay, charge goes from positive to negative direction. But the question is, electric charge or electric current is nothing but the flow of electrons. It is the flow of electrons. Acha, electrons is negatively charged. Remember, it is negatively charged. Means it has a negative charge on it. Acha, from where negative charge can come? The place where there's a lot of negative charge is there, right? Where there is a lot of negative charge, from there only na, it will attracted to the positive charge. Remember the first session I told, the opposite charges attract each other. So कोई तो एक प्लेस होगा जहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, वहां से वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है. In that way electrons must be moving from negative to positive charge. Think what I am saying, कि अगर इलेक्ट्रिक करंट की जो हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अभी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम अ रीजन वेयर देयर इज अ वेरी हाई नेगेटिव चार्ज टू अ रीजन वेयर देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज. तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, जो कि हम इलेक्ट्रिक करंट उसको हम बोल रहे हैं, दैट इज फ्रॉम अ रीजन ऑफ नेगेटिव टू पॉजिटिव, but still we take the direction of electric current as positive to negative. Why and how is it possible? Are we taking it as wrong? Think is it wrong? Is it wrong? नहीं, that's not wrong. Electric current का ना दो डायरेक्शन है. If you take this as a positive, this is negative. ठीक है, तो if it is, when it is from positive to negative direction, it is the conventional direction. Okay, and when it is from negative to positive direction, it is called as the electric flow or electronic direction. Okay, conventional मतलब अभी क्या हुआ कि sir what is conventional मतलब see, when the electric current was discovered, okay, a long back, almost 400 years back, it was discovered. Okay, so that time the scientists were not having much idea about electrons, protons. They were not at all having idea about that. So they just took it as, they just assumed that the positive charges is moving, and positive charges obviously move from region of positive area to negative area. So they just considered like this. When the electrons were discovered in the 1880s and starting of the 1900s, they realized positive charge is acquired by the
protons. Okay, and protons stage in where? Nucleus, which cannot flow. The flow is only of electrons. Okay, then it felt like there was a big blunder, but at that time there was a lot of things which was already done there. There's a lot of research papers, different books are there. Everywhere they used what? From negative to positive, the the positive to negative, the electrons are flowing. Okay, अभी इसके चक्कर में क्या हुआ कि if I have to change it, I'll have to change everywhere, like all the books, all the research paper, everywhere I needed to change. ठीक है, दैट्स व्हाई ऐसा इतना ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, दैट्स व्हाई वी जस्ट टुक इट एज इट इज कन्वेंशनल, मतलब हमें पता है कि दिस इज नॉट राइट वे, बट वी जस्ट टुक इट एज इट इज कि हाँ ठीक है, आज से हम ये समझते हैं कि हाँ दिस इज करेक्ट एंड एवरीवन एल्स विल टेक दिस एज करेक्ट ओनली. सो जब भी अभी ये इलेक्ट्रॉनिक फ्लो मतलब बस समझने के लिए, बट द फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. अच्छा, इसको समझने का एक बहुत सिंपल सा मैं एक तरीका बता सकता हूँ. जैसे कि जनरली टीचर्स बोलते हैं कि ऑल्दो द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम रीजन ऑफ नेगेटिव टू पॉजिटिव, okay, this is the flow of electron, and electric current flows in the direction of positive to negative. This is the electric करंट. अच्छा, इसको विजुअलाइज करने का एक बेस्ट मेथड है. जैसे कि मान लो देयर इज अ ऑडिटोरियम. ओके, देयर इज अ ऑडिटोरियम एंड लेट्स से आई एम मेकिंग द सीट्स. लेट्स से these are the vacant seats I am making here. Okay, so okay, ये एक ऑडिटोरियम है. लेट्स से द पीपल आर कमिंग फ्रॉम हियर. ओके, एंड एवरीवन वांट्स टू सिट इन द बैक. अभी देखो, when the people were here, now consider the direction of people as electrons. Okay, and consider the direction of movement of vacant seats as the electric current. अभी जैसे जैसे आदमी लोग यहाँ पे बैठते जाएंगे, ठीक है, सो खाली सीट जो है, जैसे कि मान लो या फिर इसको ऐसे इस तरीके से बेहतर समझ सकते हैं. मान लो इस वाले रो में लोग बैठे हुए हैं, ठीक है. नाउ दे आर कॉल्ड हियर, उनको आगे बुला लिया गया. सो द पीपल विल गो हियर इन दिस डायरेक्शन, और आगे के जो वैकेंट सीट्स है, नाउ पीछे के जो सीट्स है अब वैकेंट हो जाएंगे. मतलब ऐसा लग रहा है कि वैकेंट सीट्स आर मूविंग बैकवर्ड और जो पीपल है दे आर गोइंग फॉरवर्ड. सो ऑल दो सीट्स जो है जहां पे वैसे ही रखा हुआ है, बट वैकेंट सीट्स सीम्स लाइक मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. क्या, ठीक है. सो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है. सो आई होप इट इज क्लियर. यहाँ पे ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है. देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, कि ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन. आगे के फर्दर क्लासेस में विल सी अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हाउ इट इज डिटरमाइंड, how positive part is taken, positive terminal is taken as high potential, negative terminal is taken as low potential. ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं. For now, you just be clear that the current flows from positive to negative direction, although उसके पीछे का जो basic logical idea है, that must be clear. ठीक है. So this much is only there. I guess we should stop here. In the next class, we are starting. There's no homework today, no problem. So in the next class, we will be starting with the electric potential. Okay. So I hope the things are clear now. If it's not clear, go back, say it again. Okay. And this is easier one. Okay, chalo then. Thank you. Okay, chalo. Bye.